Namaskar and welcome to Sansad Television. I am Vishal Dahiya and you're watching our show House Highlights, where we bring you details of the day's development in both houses of parliament. Let's begin with the headlines first. Rajya Sabha returns appropriation bills to Lok Sabha for release of additional funds for services in previous years. Indian cargo traffic grew 19% despite pandemic, says Civil Aviation Minister Sindhia. Credits Atmanirbhar Bharat effort for the feat. Union Minister Nitin Gadkari gets all-round appreciation for improving road network. Some members flag concerns on quality, maintenance and toll collection. Online technologies had to be adopted in education to overcome COVID disruptions, says Union Minister Dharmendra Pradhan in the Lok Sabha. Let's now take a look at all these news in detail. Rajya Sabha on Monday returned a money bill moved by Finance Minister Nirmala Sitharaman, authorizing the government for payment and appropriation of certain sums from the Consolidated Fund for the financial year 2021-22. The Upper House also returned another appropriation bill for the expenditure done in the 2018-19 financial year. Both the appropriation bills were passed by Lok Sabha earlier. Replying to the debate, the Finance Minister ruled out any reduction of allocation in central schemes like Manrega, food subsidy, fertilizer subsidy and defence sector. So EPFO has a central board, which is the one which takes the call on what rate has to be given for them. And they had not changed it, I don't know, for quite some time. They've changed it now. From 8.4, it has come down to 8.1. And on that, a lot of questions were raised. And I appreciate I quite recognize the concern of the honorable members. It's a decision taken by the central board in which representatives of the various segments which are part of the EPFO are all seated in the board, inclusive of workers' representatives, management representatives, government representatives, all of them are seated in the board. And they have taken this call to bring it down to 8.1. And I think the Honorable Minister, Bhupendra Yadav ji, had explained as to why he had to take this call. I just want to place before Honorable Sir, you, and also to have it put on the record of the government, of the Rajya Sabha, Sukanya Samriddhi Yojana is at 7.6%. Senior Citizen Savings Scheme, sir, is at 7.4%. PPF is at 7.1%. State Bank of India's highest rate given for some portfolio, which is like 5 to 10 year fixed deposits, is at 5.50%, sir. And it has a markup for senior citizens which takes it to 6.3%. Government's own borrowing, the G6, on an average for across various tenors, is at 6.28%. That is, if government goes to borrow from a certain fund, it has to pay that kind of a rate. With all these, the EPFO has taken a call to give it at 8.1%. I just want to lay these facts before, sir, so that the fact that EPFO's central board, which has representatives from various different stakeholders for the pension fund, employees' pension fund, have taken a call. 40 years it has not been brought down to, yes, 40 years. There are today's realities which do keep us in the context of decisions which are being taken by a central board of the EPFO. It has yet to come to the Finance Ministry for approval. Members cutting across party lines took part in this discussion. Let's listen into some of them. Report number 16 of 2019, जो CAG का रिपोर्ट है, उसका चैप्टर 2, providing procurement and issues of high altitude clothing, equipment, ration and housing. मुझे वित्त मंत्री जी से मैं आपके जरिए गुजारिश करता हूं से पॉलिटिकली ना ले, इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इस राष्ट्र की
हित के नाते लेके हमारे उन जवानों के लिए जो भी करना पड़े आप करिए, जितना भी पैसा खर्च करना पड़े करिए, पर उसमें लीकेजेस ना हो, उसमें एक्सपायरी डेट वाला मटेरियल वहां तक ना पहुंचे, वो आप सुनिश्चित करें, ये मैं जरूर आपसे गुजारिश करता हूं। So far the women and children are concerned, the budget allocation for Mission Shakti increased by only 2.3% at a time when crimes against women were as high as nearly 4 lakhs in a single year. Just come to our state of West Bengal. The entire budgetary allocation for Beti Bachao, Beti Padhao is even less than a state project like Konyasri, which was awarded internationally at the Hague city of Netherlands, and our chief minister took that award. Then the appropriation bill they are presenting, and in every budget they are making many promises, but nothing is happening. So the entire exercise of the appropriation or presentation of budget and promises made by the government is a futile exercise to satisfy the people, to satisfy the media, to tell something to the media, but which has not actually happened. The promises made by the finance minister in this house is not kept up. The states are suffering. आज धोखाधड़ी कितनी हो रही है, रोज फोन पे आते हैं कि आपका फेसबुक में आप इनाम जीत गए हैं, आप इसमें इनाम जीत गए हैं, आपको कार मिल गई है, आपको ये मिल गया है। तो हमारा एक्ट जो साइबर एक्ट है इतना कमजोर है कि तमाम करोड़ों लोग रोज धोखाधड़ी होकर उनके बैंकों से पैसा निकासी हो रही है। उस पर साइबर एक्ट को जो है मजबूत करना किया जाना चाहिए, कानून कड़ा किया जाना चाहिए, जिससे ऐसे लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए मानवत। अब आंकड़ों की बात मैं करता हूं, मैं मानता हूं कुछ दिन पहले एक आंकड़ा आया, प्रधानमंत्री जी बेहद लोकप्रिय है, अरे कोई संदेह नहीं है, सचमुच बेहद लोकप्रिय है। लेकिन अगर एक एजेंसी का आंकड़ा अप्रूवल रेटिंग एक्सेप्ट करते हैं तो हैप्पीनेस इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, हंगर इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, डेमोक्रेटिक स्फीयर इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं। सांख्यिकी के साथ साथ एक अद्भुत चीज है कि उसका इस्तेमाल कई दफा लैंप पोस्ट की तरह लोग करते हैं, जब शराबी लड़खड़ाने लगता है ना तो लैंप पोस्ट पकड़ लेता है। तो मैंने कहा रहा सर, ये कोट है कि लैंप पोस्ट की तरह भी स्टैटिस्टिक्स का उपयोग होता है ताकि आप लड़खड़ा के नीचे ना गिरे। Several matters of public importance were also raised during Zero Hour in Rajya Sabha. Let's take a look. Now come to believe with the rising cases in Europe, it becomes important to have booster dose policy for India. We have seen a phase, sir, in India where there was a shortage of vaccines and citizens could not get their vaccine dose on time. Now we have surplus of vaccines, yet we are not able to come with a clear guideline to be able to vaccinate people below 60 years of age, those who are seeking a booster dose for travel purposes or for safety purposes. So I would request you through the House, sir, to urge the Health Minister to come up with clear guidelines for vaccination or booster doses for those below 60 years. आज के दिन 21 मार्च 1977 माननीय प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई की सरकार ने आज के दिन आपातकाल समाप्त किया और लोकतंत्र पुनर्स्थापित हुआ। तो आपके माध्यम से हम विनय करना चाहते हैं भारत सरकार से कि आज के दिन को लोकतंत्र विजय दिवस और लोकतंत्र पुनर्स्थापना दिवस घोषित किया जाए, जिससे आगामी दिनों में कभी लोकतंत्र पर कोई भी आघात करे तो इन सारी नई पीढ़ी को लोकतंत्र के लिए लड़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि लोकतंत्र विजय दिवस के रूप में घोषित किए जाने की। उत्तर भारत में और बिहार में दरभंगा में हवाई अड्डा का चालू किया गया है। 1972 से समस्तीपुर जिला बना, स्टेट हैंगर हैं, छोटे जहाज उतरते थे। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, आरजू करना चाहता हूं कि समस्तीपुर जिले में बड़े हवाई जहाज को उतारने के लिए और उड़ने के लिए प्रबंधन करे और इसके विस्तार में एक काम करे। यह हम आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं। Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia informed the Upper House on Monday during question hour that the Indian cargo traffic has grown to 19% despite the pandemic. He added that because of Atmanirbhar Bharat, Indian carriers were able to stand despite the COVID pandemic.
What are the number of Indian freighters operated in the absence of non-scheduled foreign freighters? As you go to statistics, let me submit that. Thank you. Indian Airlines have modified 150 passenger aircraft to be able to carry cargo in belly as well as the seat areas. So therefore, our cargo capacity, in addition to the freighters increasing from 8 to 28, even our passengers have gone from, if I may use the term, P to C, passenger to cargo. 150 planes, May 19 to May 21. What was our share of international cargo traffic movements? A measly 1.8. Please. A measly 1.8%. Today, in a period of 2 years, that share of traffic has grown from 1.8% to 19%, sir. That is what we have been able to achieve in the last 2 years as far as cargo traffic is concerned. Petroleum Minister Hardeep Singh Puri on Monday assuaged concerns of short supply of crude oil due to Russia-Ukraine conflict. He said imports from Russia are minuscule at just 0.2% of total such imports till January in the current fiscal. He also said that the government is closely monitoring the evolving situation. There have been news reports which suggest that India has been is going to increase its crude oil trade and economic engagements with Russia, considering there's a deep discount going on. Will that conflict, in the ongoing conflict, will that have any kind of diplomatic and economic ramifications as far as our future relations with other countries are concerned? Thank you so much. In the first 9 months of the year, we have imported only 0.2% of our requirements. Let me give you the exact figures. We require, Madam Honorable Sir, a total of 5 million barrels per day. That's our consumption. 60% of it comes from the Gulf. We have imported from Russia only 0.419 million metric tons out of a total of 175,000, which is less than, well, much less than 1%, 0.2%. Even if we were to scale these up considerably, it would still be a drop, literally a drop in a larger bucket. Thank you. Let's now move on to the details of the developments in Lok Sabha today as well. Several opposition leaders on Monday praised the work of Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari, but also flagged some concerns on issues such as quality of roads, their maintenance and alleged lack of transparency in toll collection. Participating in the discussion on the demand for grants of Ministry of Road Transport and Highways for 2022-23 in Lok Sabha, most MPs from opposition began their address by hailing the work done by Nitin Gadkari in the road transport sector and lauded his hands-on approach. 5 टनल्स की जनाब ज़रूरत है इमीडिएटली, जिसकी तरफ मिनिस्टर साहब तवज्जो देंगे. एक जनाब है देसा कापरन. इससे क्या होगा, डोडा का जो आप जानते हैं कास्तीगढ़ का इलाका, वो सारा जुड़ जाएगा कश्मीर के साथ, वैली के साथ, और देसा कापरन उस पर पहले ही शुरुआत हो गई है. मुझे लगता है कि उस पर फोकस करने की ज़रूरत है. दालकोला और पूर्णिया के बीच चिरैया एक जगह है जो 22वां किलोमीटर में है. पुराना NH 31 है और नया 27 है. इस 4 लेन में चिरैया के पास सर ब्रिज 2017 का फ्लड में ध्वस्त हो गया. बाईपास से जाना पड़ता है, बड़ी जाम लगती है. आप इतना बड़ा रूट बनाए तो सर ये ब्रिज बना दीजिएगा तो 4 लेन हमारा जो है कारगर हो जाएगा. एक फाइटर एयरक्राफ्ट हवाई जहाज वहाँ उतर गया आगरा हाईवे पर, तो मुझे थोड़ा जलन सा हुआ और मैंने जाकर के माननीय गडकरी जी को कहा और प्रधानमंत्री जी को कहा, और मैं बताना चाहूँगा कि बिहार में भी बाकरपुर सोनपुर से डुमरिया घाट तक एक ऐसा ही एक्सेस कंट्रोल हाईवे बनने जा रहा है जिसमें गति की जो सीमा होगी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगा. और जो हम लोग 4 घंटे और 5 घंटे में, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं गोपालगंज के, अब वो मात्र 1 घंटे 10 मिनट में कर पाएंगे. उस पर फाइटर जहाज भी उतरेगा. तो देश के प्रधानमंत्री ने सारण की जनता को और बिहार की जनता को ऐसा सड़क भी दे दिया. गंगा पार करने में बड़ी कठिनाई होती थी और पैकेज वैकेज की बात करते रहते हैं लोग, विशेष स्टेटस की बात करते रहते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि देश की सरकार नीति बनाती है और नीति के साथ जो विकास आता है वो पैकेज वैकेज से कहीं बहुत ज़्यादा है. नेशनल हाईवे 03 जो 4 लेनिंग ऑफ जलंधर टू हुशियारपुर,
ये बड़ी इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सड़क है कि यहाँ बहुत पिलग्रिमेज माता चिंतपूर्णी जाते हैं, माता ज्वालामुखी जाते हैं, बहुत लोग वहाँ ट्रैवल करते हैं। और आदमपुर इस फ्लाईओवर को क्रॉस करके आदमपुर अभी जो हमारा हवाई अड्डा बना है वो है। तो लेकिन इसका जो कट ऑफ डेट है वो 31/12/22 है, लेकिन अब तक वहाँ पिलर ही नहीं खड़े हुए। I am hopeful that states like Tamil Nadu, with a strong industrial and agricultural base, will receive its due share in the allocation. Sir, I wish to request the southern districts of Tamil Nadu may be paid more attention while sanctioning projects. Your constituency is also connected with my constituency and regarding road. Sir, NH 744, Bharatmala project. I am thankful to the government for having a new road from Aryangav, Tenmala, Nelamel, Chadayamangalam to Paripalli, the border end of my constituency. Many national highway roads projects are in my constituency area are long pending. The government should give priority and complete the projects for easy and smooth movement of the common people. World-class highways, if the maintenance is not good, the vehicle maintenance will be more, the accidents will be more, and also the whatever freight total average which is in the world, it is very high in India when compared to the other countries. So if you want to reduce that freight average per kilometer, you have to maintain the roads well. So I request the Honorable Minister through you to allocate more sufficient, not more, sufficient budget for the national highway maintenance, sir. आज भी हम महाराष्ट्र में बहुत सारी रोडों के दिक्कत हमें आती हैं, पर मुझे लगता है ये डिपार्टमेंट पिछले 7 वर्षों में जो तरीके से अमरावती के इंटरनल बाहर के जो रोड्स हैं ये डिपार्टमेंट ने किए हैं। आज अमरावती कोई भी बड़ा पॉलिटिकल आई या कोई भी बड़ा व्यक्ति हमारे अमरावती डिस्ट्रिक्ट में एंटर करता है तो वो देख के उसका दिल खुश हो जाता है कि ये रोड सेंटर से बने हुए हैं और इस तरीके से इसकी रोड की तैयारी ये डिपार्टमेंट ने की है। नितिन गडकरी साहब का नाम मैंने बदल दिया हूँ स्पाइडर मैन। मकरा जाल, हिंदुस्तान का हर कोने में स्पाइडर जैसे जाल बिछाता है वैसे नितिन गडकरी साहब ने जाल बिछा के रखा है। सड़कों का जाल बिछा के रखा है। Sir, regarding the widening of National Highway 66 passing through Kerala, a number of problems with the currently approved designs have been already brought to the notice of the Honorable Minister. Sir, one of the major demands is related to the construction of great separator in Karunagapalli town in Kollam district in my parliament constituency. वहां पर हम क्या देखते हैं कि मैंने पहले भी कहा कि हम योजनाएं बनाते हैं लेकिन योजनाओं में डीपीआर बनाते वक्त अगर जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे जाएं तो शायद बहुत आसानी से लंबी योजनाएं इंप्लीमेंट होंगी। What are the new projects this year this road transport is going to take? Because there is almost 65,000 crores, you are asking more. For that, what was the work done in the previous year? And how many kilometers of road you are going to relay or newly lay? This kind of clarity is not there in your statement. जहानाबाद से अरवल जाने वाली रोड पर अंडर पास NH 110 के ऊपर ओवर ब्रिज बनाने के लिए हम कई एक बार आग्रह किया है, लेकिन विभिन्न कारणों से उसको नकारा जा रहा है। हम फिर से आग्रह करते हैं कि जहानाबाद में जो 110 पर अंडर पास है उस पर फ्लाईओवर बनाया जाए। I wish to know the progress of R&R and steps taken to release the money for R&R, sir. And also, sir, the Schedule 13 of AB Reorganization Act mentions mandates to construct a rapid road connectivity from Amravati to Hyderabad and important cities in Telangana, which is the roads to the important cities in Telangana, sir, which is a progress. What is the progress of this? Kindly may explain. JNPT, one of the first port which is giving the maximum to the government of India. So that port is making a lot of traffic therein. So that road also from especially from JNPT to Paraspa that goes to Karjat and to the Murmad, that is also being required. बहुत important expressway highway जो दिल्ली से लखनऊ जाता है, मंत्री जी
मेरे ख्याल से 25 साल होगा इसे बनते हुए, आज तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। और इतना इम्पोर्टेंट हाईवे है, आज भी 6-7 जगहों के ऊपर इसमें कार्य नहीं हो पा रहा, बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती हैं। मेरठ तक तो एक्सप्रेसवे बन गया है, मेरठ के आगे बहुत समस्याएं हैं। Employers having 10 or more employees must have a committee to probe sexual harassment complaints. Union Labour Minister Bhupendra Yadav informed this to the Lok Sabha during question hour on Monday. There are 3 types of harassments at workplace. That is sexual harassment and mental harassment and physical harassment are taking place. I would like to know the minister what type of complaint received in respect to state governments. कार्यस्थल पर जो भी कर्मचारी काम करते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत उनके कार्य को लेकर, उनके कार्य की सुरक्षा को लेकर, उनके कार्य के स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लेकर अगर किसी प्रकार की अनियमितता रखी जाती है तो श्रम मंत्रालय के डीजी फासली के द्वारा उसके संबंध में दिशा निर्देश किए जाते हैं। जहां तक कार्यस्थल पर कार्य करने वाली जो महिलाओं की, जो पावर लूम में जो महिलाएं काम करती हैं, उनके शारीरिक उत्पीड़न का विषय है, उसको सीधे सीधे महिलाओं के कार्यस्थल पर 2013 का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत उसमें शिकायत दर्ज की जाती है। वो शिकायतें राज्य सरकार के द्वारा, चूँकि कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, उनके अंतर्गत दर्ज की जाती है और उसके आंकड़े एनसीआरबी पे उपलब्ध हैं। Speaking in Lok Sabha during question hour, Union Education Minister Dharmendra Pradhan informed that the COVID-19 pandemic has severely affected the education system in India as anywhere else in the world. भारत में अभी जो there is a new national education policy, lot of emphasis, lot of priority has given on this issue. Addition to that, during this COVID period, हमने तो डिजिटल एजुकेशन, दिशा टीवी वगैरह लगाए, लेकिन हाउ टू एजुकेट द डिसेबल students, there's a new challenge. We all are concerned, experts are working on that. I would like to seek advice of this house, how to create more trainer, more school, who all are dysfunctional, let us know them. Collectively, we have to face this challenge, we have to educate all these segments. That's all we have in this edition of House Highlights. We'll come back tomorrow again with all the details of developments in both houses of Parliament. Till then, keep watching Sansad Television. Thank you.